Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Talks with HK. How are you all? I hope you all are fine and doing great in your life. I am back with the part 2 of the first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. If you have not seen the part 1 of this chapter, so go and watch it. Now, before moving forward, let us recap or recall what we have studied in the part 1 of this chapter. The very first topic is Introduction to Commerce, that is commerce in ancient times and commerce in modern times. After that, we have studied the development in commerce, that is rise of intermediaries, or we can say indigenous banking system, transportation, etc. After that, what we have studied, we have studied reindustrialization of India, why there was need of reindustrialization, and so on. Now, up next we have studied what are human activities and its types, that is economic activities and non-economic activities. Then the concept, definition, and the characteristics of business. As we all have studied the important point, that is the main purpose of business or the main objective of business is to earn profit. But as business is an integral part of the society, so it has multiple objectives, that is economic objectives, social objectives, and personal objectives. And the last topic that we have studied is role of profit in business. I hope this much is clear to everyone, and for more details of these topics you can go and watch the first part of this chapter that I had already uploaded. So, let's begin. Today we are going to study the classification of business activities. Now, basically the business activities are classified into two on the basis of their functions. The very first is industry and up next is commerce. We will be discussing this in detail. Let's talk about industry. What is industry? Industry means the activities which converts the raw material into the finished products or the useful products that the consumers can use, isn't it? If we talk about its definition, we can say that industry means those activities which convert the raw material into the useful products, isn't it? Which converts the raw material into the useful products. And it also includes the activities like production and processing, isn't it? In industry, what we do? We do production and processing. Let us take the example of in textile industry. What we do in textile industry? In textile industry, there is the manufacturing of cloth. So, textile industry can be the example of an industry. Let's move forward. What is the purpose of industry? The purpose of industry is to create utility. What is the meaning to create utility? It means that the industry creates the utility of any product. How it creates? By converting the raw material into useful finished goods, isn't it? अब हम किसी भी goods की utility कैसे कर सकते हैं create? By converting it into finished goods, है ना? Raw material को हम finished goods में convert करेंगे तो we can create its utility. So this was it. The main purpose of industry is to create utility by converting the raw material into the useful finished goods. Now, in industries, the goods are classified into two types, that is consumer goods and capital goods. So, what are consumer goods? Let us understand. The consumer goods are the goods that are consumed by the consumers. So, we can say the goods which are directly consumed by the consumers are known as consumer goods. It is as simple as that.
Now, what are the examples? The examples are biscuit, TV, radio, refrigerators, etc. Isn't it? Now, let's talk about capital goods. What are capital goods? Capital goods are the goods which are used in the further production process. Isn't it? Capital goods are the goods which are used further in the production process. Why so? To make it in useful product. किस लिए हम यूज़ करते हैं? एक यूजफुल प्रोडक्ट, एक फिनिश गुड्स को क्रिएट करने में. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स आर द गुड्स which are further used in the production process to make a or to manufacture a finished goods. These are known as capital goods. Clear? Let us take the example, then you can understand. Like machinery, isn't it? Machinery can be a capital good. है ना? We can use machinery for the further in the further production process. Cement can be used as a raw material in industries, isn't it? So, these are the goods, that is consumer goods and capital goods. I hope you all are getting my point. Now, the industries are classified into three types, that is primary industry, secondary industry and tertiary industry. Now, let's discuss primary industry. The primary industry includes all those industries which are concerned with the extraction of natural resources, and the second point is reproduction of living species. Basically, two things it does. What is extraction and reproduction? ठीक है, extraction of natural resources and reproduction of living species like plants, animals, birds, etc. Okay. Now, primary industry is also classified into two, that is extractive industry and genetic industry. Now, what are extractive industries? Extractive industries are those which involves the extraction of something, that is from natural resources, either extraction of minerals from earth or timber from forest, isn't it? These two are the examples. Very simple definition of extractive industries. Basically क्या है भाई? Extractive industries involves the extraction of something from natural resources. हम nature से कुछ भी extract कर रहे हैं. For example, extraction of minerals from earth, or we can say timber from forest. Now, the product of extractive industry can be directly used as a raw material in other industries. We can use minerals as a raw material in other industries. We can use timber as a raw material in other industries. Getting my point? Okay, let's move forward. Now, we are talking about genetic industries. As the name suggests, genetic, so the industries involves the activities of rearing and breeding. Okay, it involves the activities of rearing and breeding. किसको भाई? Rearing and breeding of living organisms like plants, animals, birds, etc. Isn't it? Let's see the examples, that is rearing of silkworm for silk, and what else? Plants in nursery, rearing of plants in nursery, or we can say dairy farms, poultry farms, etc. These are the examples of genetic industry. So, what is genetic industry? Genetic industry involves the activities of rearing and breeding. किसकी rearing और breeding करेंगे भाई? Living organisms की. ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? Are known as genetic industries. For example, rearing of silkworm and rearing of plant in nursery. I hope this much is clear to everyone. Now, secondary industry. What are secondary industry? The industries, वो industries that uses the products or the goods of primary industry, कैसे? As their raw material. For what? To produce the finished goods. Isn't it? Very simple it is. The industry which uses the primary industry's goods as their raw material to produce the finished goods. Let's see. The industry which used
products which are extracted and produced by the primary industry as their raw material. क्यों भाई? As a raw material to produce the finished goods are known as secondary industry. I hope you all are getting my point. Now, the secondary industry are of two kinds, that is manufacturing industry and construction industry. Okay, now let's first talk about the construction industries. What are construction industries? The industries which are concerned with the construction of building, as the name suggests, है ना? As the name is construction industry, so it is basically linked with the construction only. So the industries which are concerned with the construction of buildings, dams, roads, etc. are known as construction industries. And important thing is that they uses their raw materials as steel, cement, iron, etc. But the important point that its unique feature is what? Its unique feature is that these industries cannot transfer or shift their products to market. The important point is what? That these industries cannot transfer or shift their products to market, as the construction are fixed to their sites only, isn't it? So, the example we can take it as construction of roads, construction of dams, etc., construction of buildings. I hope this much is clear to everyone. Now, we will be talking about manufacturing industries. What are manufacturing industries? So, manufacturing industries are what? The manufacturing industries are engaged in the process of conversion of raw material or semi-finished products into finished goods. Simply, as the name suggests that manufacturing industries, so in manufacturing industries में हम क्या करेंगे भाई? Manufacturing करेंगे goods की, products की. So, manufacturing industries are engaged in the process of, किसके process में engage होते हैं भाई? Of raw material into finished goods. ठीक है, यही तो process होती है, इनका यही तो work होता है, that conversion of raw material or semi-finished goods into finished goods. Isn't it? For example, timber is converted into furniture, cotton is converted into cloth, and many more are there. I hope you all have got the point. Let's move forward. Now, the manufacturing industries produces two types of goods. Okay, they produces two types of goods. One is consumer goods and other is industrial goods. Consumer goods, as we all have already studied, that the goods which are directly consumed by the consumers are known as consumer goods, or we can say these goods are used for day-to-day consumption. Example, oil, clothes, bread, etc. Now, if we talk about industrial goods, so what are industrial goods? The goods which are produced for manufacturing consumer goods. भाई कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी गुड्स यूज्ड होते हैं, जो भी गुड्स यूज़ करते हैं हम किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स, isn't it? Example, tools, equipments, these all we use, na? These all are the goods which we used to produce the consumer goods. I hope it is clear to everyone. Now, manufacturing industries are classified into four types. Okay, the very first is analytical industries. Now, what are analytical industries? So, the basic raw material is broken into different parts to produce the finished goods. In analytical industry का काम क्या है? Basically, the analytical industry, what does it do? It breaks the raw material into different parts to produce the finished goods. For example, from example it will be clear. For example, processing of crude oil, है ना, to produce finished products. अब crude oil से हम क्या कर सकते हैं? Different type of oils या different type of products निकलते हैं. That is diesel, isn't it? Kerosene, petrol, etc. So, what we can define analytical industry?
In analytical industry, the basic raw material is broken into different part of finished products. Okay, up next is synthetic industry. Now, what is synthetic industry? In synthetic industry, two or more materials are mixed. ठीक है, एनालिटिकल में हमने क्या किया था भाई, एक प्रोडक्ट में से डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट किए थे, ठीक, मैन्युफैक्चर किए थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब सिंथेटिक में हम क्या कर रहे हैं, दैट दो मटेरियल्स को मिक्स टुगेदर कर रहे हैं. ठीक है, फॉर व्हाट, टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, इजंट इट. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस केमिकल्स आर मिक्सड टू प्रोड्यूस पेंट्स, है ना, और टू प्रोड्यूस सोप, और टू प्रोड्यूस कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा. Getting my point? Okay. Up next is processing industry. अब भाई processing industry में क्या होता है? In this, the raw material is processed through various stages. ठीक है, raw material is processed through various stages of production, and then finally the finished goods are manufactured. Like the very simple example is sugar industry. In this, the sugar cane is processed to make sugar, or we can say iron and steel industry. Okay, now the last one is assembling industry. Now what is assembling industry or assembly industry? ठीक है, we can call it assembling industry or assembly industry. Now in this, the various finished products are combined to produce a new finished products. बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं भाई, कंबाइन कर देते हैं. क्योंकि एक हमें न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स. ठीक, अब कंप्यूटर्स में हम डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारे पास, वो एज अ फिनिश गुड्स होते हैं, एंड हम उन डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके क्या क्रिएट कर देते हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर देते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर देते हैं, या टेलीविज़न मैन्युफैक्चर कर देते हैं. ठीक, सो these are the 4 types of manufacturing industries. The very first is analytical industry. ठीक, in this the basic raw material is broken into different parts, है ना, to produce the finished goods. Analytical में क्या करते हैं, हम एक बेसिक प्रोडक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिससे हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक, सिंथेटिक में भाई हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री में हम 2 और मोर मटेरियल्स को मिक्स करते हैं टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट. नाउ प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन द फाइनल और द फिनिश्ड गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड, इजंट इट. नाउ असेंबली इंडस्ट्री. असेंबली इंडस्ट्री में भाई हम क्या करते हैं, इन असेंबली इंडस्ट्री the various finished goods are combined to produce a new finished goods. Okay, I hope this much is clear to everyone. If anyone is having any query, any doubt, you can comment down in the comment section. I will be solving it out. Up next is tertiary industry. So in tertiary industry is concerned with providing services. What is its main function? Is to provide services, okay, which support the activities of primary and secondary industry. किसके लिए? For the smooth flow of goods and services. So we can say that tertiary industry is concerned with providing services which support the activities of primary and secondary industry for the smooth flow of goods and services. Tertiary industry is also known as service industry. Why? The reason behind is that it provides services, isn't it? It provides services which support the primary and secondary activity. That is the main reason why the tertiary industry is known as service industry. Now, the types of service industry or types of services provided by the tertiary industry. The very first is transportation. This is very common to all of you. You all are familiar to it. What is transportation? Movement of goods or movement of goods from one place to another. This is the basic function of tertiary industry. Up next is banking. Tertiary industry also gives the facility, है ना, to provide loans or to provide credit to the industries. Next is insurance.
Tertiary industry helps them to give the security for their risk, like it provides coverage from the various types of risk. Next is warehousing. It also gives the services of warehousing for storage of goods, है ना? It provides the storage place for the goods so that the producers can keep their goods safely at warehouses. And the last one and the important one is advertising, isn't it? It all by advertising the goods and services, it provides the information to the consumers about the goods produced by the primary and secondary industry. Getting my point? So these are the types of services provided by the tertiary industry: transportation, banking, insurance, and warehousing. And the last one is advertising. I hope this much is clear. Now, functions of commerce. As we all have already studied about the commerce. So, commerce is considered as the backbone of industry, isn't it? Commerce is considered as the backbone of industry. So, now let us understand why it is considered by the functions of commerce. We can say functions of commerce or role of commerce. So, commerce helps in removing many of the hindrances. Like commerce helps in removing the hindrances of person, place, time, risk, exchange, and knowledge. Now, let us first understand what are hindrances. Hindrances, we can say, are the barriers or the drawbacks. Okay. And afterwards, we will see how the commerce helps in removing these hindrances. The very first is removing the hindrances of person. Now, very simple. Goods are produced by the producers, isn't it? And the goods are consumed by the consumers. Getting it? Goods are produced by the producers and goods are consumed by the consumers. There is no direct link between the producer and a consumer. Agreeing to it? There is no direct link. So, who creates the link? The trade segment of commerce. The trade segment of commerce creates the link between the producer and the consumer. ठीक है? जो trade segment है, जो traders हैं, वो क्या करते हैं? The traders helps in exchanging of goods and services from producers to consumer. So in this way, commerce helps in the removing of hindrances of person with the help of traders. ठीक है? किसकी हेल्प से? ट्रेड सेगमेंट की हेल्प से और ट्रेडर्स की हेल्प से. तो आप ये लिख सकते हो कि कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन ब्रैकेट में ट्रेडर्स, इजंट इट? नाउ अप नेक्स्ट इज प्लेस. अब भाई हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या है और हाउ इट कैन बी रिमूव्ड. सो सबसे पहली बात, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है भाई, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, है ना, एंड द कंज्यूमर्स आर एट द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, इजंट इट? गुड्स तो भाई एक ही जगह प्रोड्यूस होते हैं ना, और कंज्यूमर्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हैं. सो देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर्स. नाउ हाउ कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस? कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस by transportation, isn't it? Transportation function of the commerce helps in removing the hindrance of place, isn't it? Transport helps, क्या होता है भाई? Transport helps in the movement of goods from one place to another. Likewise, transportation helps in moving the goods from the place of production to the market so that it can reach to the consumers. So, hindrances of place को कौन भाई remove करता है? Transportation. Now, up next is the hindrance of time. Now, what is hindrance of time? ठीक, very simple. The goods are produced in a particular season. Okay, it cannot be produced. Basically, some of the goods are produced in a particular season. They cannot be produced whole year, like wheat, rice, pulses, etc. Right? And on the other hand, some goods are produced throughout the year, but their demand is in a particular season. Agreeing to both the points, some goods are produced in particular season, है ना, but their demand is throughout the whole year, like wheat, rice, pulses, grains, etc.
On the other hand, some goods are produced throughout the year, but their demand is in a particular season, isn't it? So there is a time gap. किसका गैप हो गया? टाइम का गैप हो गया बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन. ये तो हो गई भाई हिंड्रेंस की बात, बैरियर की बात. नाउ हाउ द कॉमर्स रिमूव दिस? सो द कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग. ठीक है, कॉमर्स वेयर हाउसिंग की हेल्प से रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ टाइम को. एज गुड्स कैन बी kept in warehouses very safely, isn't it? In warehouses, goods cannot be destroyed. For example, the perishable goods are stored in cold storage. Inflammable goods are stored in fireproof warehouses. So, warehousing eliminates the hindrance of time. I hope you are getting this. Now, up next is hindrance of risk. अब भाई hindrance of risk क्या है? बेसिक सी बात है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन बिजनेस देयर इज लॉट ऑफ रिस्क, है ना. रिस्क गोज इन हैंड टू बिजनेस. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन द बिजनेस और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज टू फेस. नाउ what to do, how we can compensate the risk? So the commerce provides the facility of insurance, isn't it? The insurance helps in the removal of hindrances of risk. ठीक, अब भाई करता क्या है इंश्योरेंस? प्रॉब्लम हो गई रिस्क, सोल्यूशन क्या हो गया उसका? इंश्योरेंस. ठीक, अब वो क्या करते हैं इंश्योरेंस? इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, है ना, एंड ऑल्सो गिव्स द कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड गुड्स. जो जिस गुड्स की आपने इंश्योरेंस करा रखी है, जो इंश्योर्ड गुड्स हैं, इंश्योरेंस क्या करते हैं? हेल्प करता है टू गिव द कंपनसेशन टू द बिजनेसमैन, है ना. लॉस को कंपनसेट करने की ट्राई करता है. ठीक है. सो द बेसिक और द कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क दैट आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, बाय रेन, फायर, फ्लड एटसेट्रा. इजंट इट? गेटिंग द पॉइंट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अप नेक्स्ट इज hindrances of exchange. Now what is hindrances of exchange? Goods and services are produced by the manufacturers and sold to the buyers in exchange of money, isn't it? भाई गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं? कंज्यूमर्स को, इन एक्सचेंज ऑफ मनी. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, दैट हाउ द पेमेंट्स कैन हैपन, हाउ द पेमेंट्स वुड बी डन. सो द कॉमर्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ दिस हिंड्रेंसेस बाय the banking system, the very common thing, banking system, as banks helps the buyers and the sellers, isn't it, in making the and collecting the payments. ठीक है, दोनों के लिए बहुत सिंपल हो जाता है भाई, बायर्स और सेलर्स के लिए, टू मेक द पेमेंट्स और टू कलेक्ट द पेमेंट्स. एंड द अदर थिंग, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स और ग्रांट्स द क्रेडिट फैसिलिटी. So we can say that the hindrances of exchange can be removed by the banking system. Now the last one is hindrances of knowledge, that how the consumer can be aware about the new goods that is produced by the producer or the manufacturer, as we have already studied that there is no direct link between the producer and a buyer, isn't it? So it can be removed, the hindrances of knowledge can be removed by advertisements, as advertisements creates awareness about the new products and their benefits to the consumers, isn't it? Advertisements, so you all know, na, you all see also. So hindrances of knowledge can be removed by the advertisements. I hope you all are getting it. बहुत बेसिक सी बातें हैं ये, कि हिंड्रेंसेस कौन सी हैं, ये सारी हिंड्रेंसेस हैं, ये सब कैसे रिमूव हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. दैट पर्सन की किससे होगी? ट्रेडर्स से होगी या ट्रेड से होगी, ठीक है. प्लेस की किससे होगी? ट्रांसपोर्टेशन से होगी. टाइम की किससे होगी हिंड्रेंस रिमूव? वेयर हाउसिंग से, ठीक. रिस्क की किससे हिंड्रेंस रिमूव होगी? इंश्योरेंस से. एक्सचेंज की किससे होगी? बैंक से और बैंकिंग सिस्टम से. एंड द लास्ट वन इज नॉलेज. नॉलेज की किससे होगी? एडवर्टाइजिंग और एडवर्टीजमेंट, इजंट इट? ओके, नाउ let's move forward. Classification of commerce. So commerce is classified into two broad categories, that is trade
एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. ठीक है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ट्रेड. व्हाट इज ट्रेड? व्हाट इज ट्रेड? इट इज़ वेरी सिंपल, है ना. ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स एज वी ऑल नो. अब भाई ट्रेड है क्या? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. What it refers to? It refers to buying and selling of goods and services. And what next? It is a link between the manufacturer and a consumer. अभी हमने देखा कि भाई ट्रेड जो है वो रिमूव करता है hindrances of person. So it links between the manufacturer and the consumer, isn't it? Now, what else? I hope this much is clear. Trade is clear to everyone. What is trade? Buying and selling of goods and services is known as trade. And the second thing, it also creates a link between the manufacturer and the consumer. Now, the trade is classified into two types. Okay, internal trade and external trade. ठीक. अब internal trade क्या है? Buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country. मतलब एक कंट्री के अंदर ही हम, एक अपनी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ही हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं. ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे? इंटरनल ट्रेड. गेटिंग माई पॉइंट? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन, रिमेंबर, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, और वी कैन से इट एज होम ट्रेड. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. नाउ एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं, फिर इसकी टाइप्स की बात करेंगे. ठीक. अब भाई एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गया? बहुत सिंपल, सेम डेफिनेशन है. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट उसमें तो विद इन, इसमें क्या आ जाएगा? बियॉन्ड, मतलब अपनी कंट्री से बाहर, बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ठीक. अपनी कंट्री से बाहर जो हम ट्रेड करेंगे उसे एक्सटर्नल ट्रेड कह देंगे, और जो अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करेंगे उसे हम क्या कह देंगे? इंटरनल ट्रेड. आई होप दिस मच इज क्लियर. इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ internal trade? Basically two types are there. One is wholesaler and other is retailer. I hope this is very simple topic. Wholesaler, you all know that it refers to, or wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantities. wholesale की बात है भाई. wholesale में हम क्या करते हैं? large quantities को purchase करते हैं. ठीक. तो it refers to buying and selling of goods and services in large quantities, as wholesaler buy goods and services direct from the manufacturer. Isn't it? होलसेलर क्या करता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करता है और उसे कैसे सेल कर देता है? टू द रिटेलर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रिटेल ट्रेड? अब रिटेल ट्रेड की बात करें अगर, तो रिटेल ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज. भाई होलसेल में हमने क्या किया था? लार्ज क्वांटिटी में बाय और सेल किया था. अब रिटेल में हम क्या कर रहे हैं भाई? स्मॉल क्वांटिटी में बाय और सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है. एंड देन द रिटेलर गिव्स, और द रिटेलर प्रोवाइड्स द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ओके. द फंक्शन ऑफ द रिटेलर इज, और वी कैन से व्हाट इज द रिटेल ट्रेड. पहले तो रिटेल ट्रेड देख लेते हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज. एंड रिटेलर का क्या फंक्शन है? दैट दे प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. ओके. नाउ अप नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड. हमने देख लिया एक्सटर्नल ट्रेड क्या है भाई. Selling of goods and services beyond the geographical boundaries is known as external trade. Now, external trade is classified into three. ठीक. So very first is export, or we can say export trade. बहुत सिंपल. एक्सपोर्ट क्या हो गया भाई? हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, है ना. फॉरेन कंट्री में हम जो भी गुड्स अपने सेल करते हैं उसे क्या कह सकते हैं? हम एक्सपोर्ट कह सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड. अब ये क्या हो गया? रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. एक्सपोर्ट में तो हम सेल कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में. इम्पोर्ट में हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे या फिर बाय करेंगे किसको? गुड्स को फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. इजंट इट? नाउ व्हाट इज इंटरपोर्ट? ओके, व्हाट इज इंटरपोर्ट? इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट. इजंट इट? बहुत सिंपल है भाई. हमने गुड्स को इंपोर्ट किया किसी अदर कंट्री से. किस लिए इंपोर्ट किया? फॉर द पर्पस टू एक्सपोर्ट इट. एक्सपोर्ट करने के लिए हमने किसी और कंट्री से इसको इंपोर्ट किया. ओके. अब भाई यहाँ पे इंटरपोर्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है. इट इज़ ENTREPOT. ओके.
दिस इज स्लाइट एरर, ENTREPOT. नाउ अब इंटरपोर्ट क्या है भाई? इंटरपोर्ट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, हमने इम्पोर्ट किए गुड्स किसी और कंट्री से, बट किस लिए किए? अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं किए. क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए किसी और दूसरी कंट्री को. दिस इज नोन एज इंटरपोर्ट. गेटिंग माई पॉइंट? हम सेल्फ कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री में इसका कंजम्पशन नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करके किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे, सेल आउट कर देंगे. Isn't it? Now, I think this much is clear to everyone. Trade is clear. If you are having any doubt up till here, you can comment down in the comment section. I will be clearing your doubts. Now, up next is, what are auxiliaries or aids to trade? So, the activities which help in smooth flow of trade. ठीक है, वो activities जो help करती हैं किसमें? In smooth flow of trade are known as aids to trade or auxiliaries to trade. Isn't it? Now, what are aids or auxiliaries to trade? इसमें क्या क्या include होता है? So, the very first is transportation or transport and communication. Very simple. Transport is what? Movement of goods from one place to another. So, it fulfills the gap of place. है ना? प्लेस का जो हमारा ऑब्स्टिकल है और द बैरियर है वो किससे रिमूव हो जाता है? ट्रांसपोर्टेशन से. ठीक, as consumers are in different parts of the countries and the producer is at one place. Now, if we talk about communication, so communication helps in the exchange of information. Through communication, we can exchange the information between producer, consumer and traders. For example, through postal services, through telephone services, through internet, etc. I hope this is clear, transportation, communication. Let's move forward. Banking and finance. Now, banking and finance. Banks and financial institution क्या है भाई उनका function? To provide loan, isn't it? To provide credit for the smooth functioning of the business. So, banking and finance helps in the removal of or helps in the overcoming of problem of funds. Okay. Up next is insurance. Insurance is what? Insurance provides protection, ठीक है, from several kinds of risk. As risk is involved in business, so insurance helps in providing the protection. ठीक है, from some kinds of risk such as risk of loss, risk of fire, ठीक है, loss due to fire, loss due to accident, and many more. Now, up next is warehousing. As some goods are produced throughout the season, but the demand is at particular season, and some goods are produced during a particular season and their demand is throughout the whole year. So, to overcoming this problem, warehousing is useful, as the traders or the manufacturers can store their goods and services in warehouses, isn't it? Now, the last one is advertising. Advertising helps the producers in advertising their products. That is, क्या होता है भाई एडवर्टाइजिंग में? क्या होता है? If a producer has produced a new goods, so the advertisements helps in creating the awareness, है ना, किसके बीच में? among the consumers regarding the new goods that is produced or manufactured. ठीक, it is also a very good technique of sales promotion. Getting my point? So these are the aids or auxiliaries to trade. I hope this much is very clear. This is similar to the commerce, that how it removes the hindrances. Okay. Now, the last topic is business risk. What is business risk? Business risk, if we talk about in simple words, it means loss. ठीक है, the chance of loss that can occur to a businessman. Okay. Now, if we talk about business risk, it refers to लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट. दोनों चीज़ें आएंगी भाई, या तो लॉस हो गया या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया. ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी. भाई अब अनसर्टेनिटीज़ क्या है वो भी आगे हम समझेंगे. अनसर्टेनिटीज़ बियॉन्ड विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल. भाई ऐसी अनसर्टेनिटीज़ जो हमारे कंट्रोल में या प्रोड्यूसर के कंट्रोल में है ही नहीं. ठीक है, सो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट. रेफर्स टू द लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल. ठीक है, जो प्रोड्यूसर के कंट्रोल में ही नहीं है. लाइक
चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज हो गया भाई, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्लाइन इन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर फैशन चेंज हो गया सपोज, तो क्या होगा, कंज्यूमर्स वो प्रोडक्ट बाई नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स स्टार्ट सर्चिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स। सो इससे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। भाई ये तो हमने बात कर ली, रिस्क, बिजनेस रिस्क है क्या, अब इसका नेचर क्या है, ठीक। बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। भाई अब अराइज क्यों होता है, भाई अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज, कभी भी कोई भी मार्केट इज़ वेरी वाइड, सो कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है ना। अनसर्टेनिटीज मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, है ना। भाई हम फ्यूचर के लिए तो कभी भी श्योर हो ही नहीं सकते। सो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर इन बिजनेस, इजंट इट। लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी, है ना, चेंज इन डिमांड हो गई किसी में, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये सब क्या हो गई भाई, दिस अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। नाउ असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब बिजनेस रिस्क क्या है भाई, असेंशियल पार्ट है एवरी बिजनेस का, है ना। कैसे एसेंशियल पार्ट कैसे है, एज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि दैट रिस्क, बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिस्क, और वी कैन से रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, ठीक है। नो बिजनेसमैन कैन अवॉइड द रिस्क, नो बिजनेसमैन कैन अवॉइड द रिस्क, दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, है ना। रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड और रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और removed. Okay, now up next is degree of risk depends upon the nature and size of business. भाई रिस्क कितना है वो किस पे डिपेंड होता है, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, isn't it? अब ये कैसे भाई पता चलेगा, एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट अ बिजनेसमैन डीलिंग इन फैशन आइटम्स, सो he or she will bear more risk as compared to the business involved in standardized goods, है ना भाई। फैशन आइटम्स में ज़्यादा रिस्क क्यों है, क्योंकि फैशन एकदम चेंज होता रहता है, एंड स्टैंडर्डाइज गुड्स में रिस्क कम क्यों है, क्योंकि उसका इतनी जल्दी चेंज नहीं आता स्टैंडर्डाइज गुड्स में। सो बिजनेस रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एज साइज की भी यही बात है, भाई लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल बिजनेस। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द लास्ट वन इज profit is the reward for bearing risk. The most important point that profit is the reward for bearing risk. Okay, हमने फर्स्ट पार्ट में भी यही देखा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट द प्रॉफिट इज a gift that is or is a reward that is given to a businessman for bearing risk. Okay, larger risk means more profit, less risk means lesser profit. So profit is a reward for bearing the risk. I hope this much is clear what is business risk and the nature of business risk. Now we will be studying what are the causes of business risk. भाई causes क्या हैं business risk के, हमने risk के बारे में जान लिया, उसके nature को देख लिया, अब causes क्या हैं, किन वजह से होता है business में risk. The very first cause is economic cause. ठीक, अब भाई बात करते हैं अगर economic cause की, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से हमें रिस्क कैसे होता है, ठीक। इकोनॉमिक कॉजेज़ आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशंस, ठीक है भाई। मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आ गए तो ये क्या हो गया, एक इकोनॉमिक कॉज हो गया, एक इकोनॉमिक रीज़न हो गया जिसकी वजह से बिजनेस को रिस्क हो सकता है। जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस हो गई, या फिर फैशन चेंज हो गया तो कस्टमर्स की डिमांड भी चेंज हो जाएगी, इजंट इट। गेटिंग माई पॉइंट। इकोनॉमिक कॉजेज़ कैसे हो गए भाई, जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, ठीक, और क्या हो गया, चेंज इन फैशन आ गया, या फिर कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो गई मार्केट में, तो क्या हो गया, ये सब हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं जिससे बिजनेस रिस्क होता है। अब नेक्स्ट इज नेचुरल कॉजेज़। भाई अब नेचुरल कॉजेज़ कौन से हैं जिससे हमें रिस्क है। नेचुरल कॉजेज़ क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक, नेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट ह्यूमन बींग्स जो है नेचर पर डिपेंड करते हैं, इजंट इट। Human beings have no control on the nature. For suppose some natural calamities आ गई like earthquake, drought, ठीक है, this affects lot on the business. बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो नेचुरल कॉजेज आर देयर। अब नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। अब ह्यूमन कॉजेज क्या है भाई,
क्या है? डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, उससे रिस्क हो सकता है, ठीक है। और चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स और एम्प्लॉयज़, जैसे अभी हमने देखा कि भाई कोई एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी कर दे या कोई एम्प्लॉय प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो उससे भी बिजनेस रिस्क होता है. सो दिस इज अनदर कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, दैट इज ह्यूमन कॉज. कोई एम्प्लॉय केयरलेस कर दे, मिस हैंडल कर ले कोई मशीनरी को, ठीक है, दिस कैन कॉज अ हेवी लॉस. नाउ द लास्ट वन इज physical causes. I hope this much is clear. All the three causes are clear. Economic causes, ठीक है, this is due to the change in market or price fluctuations or demands of the customers. ठीक. Natural causes किससे हो गए भी? Natural causes are done, natural causes are due to the nature. ड्रॉट हो गई, अर्थक्वेक हो गई, इस सब से क्या हो गए? हमारे नेचुरल कॉजेज हो गए, इसकी वजह से बिजनेस रिस्क हुआ. अब ह्यूमन कॉजेज क्या हो गए भाई? किसी एम्प्लॉय की वजह से कोई एम्प्लॉय, लाइक इफ एनी एम्प्लॉय इज डिसऑनेस्ट टू द कंपनी, ठीक है, और ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ एनी एम्प्लॉय, इससे वही रिस्क होता है, हेवी लॉसेस होने का चांस है. नेक्स्ट लास्ट वन इज फिजिकल कॉज. नाउ फिजिकल कॉज क्या है भाई? ठीक है, फिजिकल कॉजेज क्या हो गए? ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट्स. भाई असेट्स के डैमेज में जो भी कॉज आते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल कॉजेज बोल सकते हैं, इजंट इट? ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ असेट्स आर नोन एज फिजिकल कॉजेज. लाइक क्या हो गई? चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई भाई. तो जो हमारे पास मशीनरी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो कैसी हो जाएगी? आउटडेट हो जाएगी, है ना. कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है भाई? हमें लॉस हो सकता है, ठीक है. एंड एक्सीडेंट हैपन्स टू एन एम्प्लॉय. तो दीज आर द फिजिकल कॉजेज विच कैन create a risk to the business. I hope this much is clear to everyone. So here the chapter is over. I hope you all understand it. If any one of you having any doubt, you can comment down in the comment section. I will be clearing your doubts. If you like this video, please hit the like button and share it with your friends. If you haven't subscribed to my channel yet, there is a subscribe button on your screen. Please subscribe. That's all.